See the activity. This activity is taken from activity 4, friction. Let us do an activity to understand the sliding friction. Our day-to-day experience tell us that it is easier to keep sliding an object once it has been put in motion than to make it slide from rest. Let us do an activity to verify the fact about sliding friction. See the picture carefully. This is a table. This is a tabletop. Wooden block. See here. Pencil. This is a pin. Wooden tray and marbles that are shown in figure and string. Okay, see carefully. So let us start to understand this activity. Take a wooden tray. Take a wooden tray or block. Place it near the edge of tabletop. Place it near the edge of tabletop. एक किनारे पर इस ब्लॉक को रखेंगे. Keep a cylindrical pencil. That is the cylindrical pencil. और रॉड. आप रॉड भी ले सकते हैं, पेंसिल भी ले सकते हैं. On the opposite edge of the tabletop. टेबलटॉप के दूसरे एज के पास आप रख सकते हैं. By using drawing pins. See here, drawing pins. And put it between drawing pins. Make sure that pencil or rod is free to rotate about its axis. ये रोटेट कर सके ऐसा हम रखेंगे. ऐसा नहीं कि पिन लगा दिए और रोटेट ही नहीं कर रहा हो. So make sure it as shown in the figure. You can also use a pulley for this purpose. You can use a pulley for this purpose. आप पुली भी यूज कर सकते हो. Next, take a plastic lid of a jar. See here, plastic lid of a jar. Make 3 holes. 3 holes. ठीक है, इसमें धागा हम लोग बांध देंगे. Make 3 holes in it. Put 3 pieces of string as shown in the figure. Put 3 pieces of string through the holes and tie them together. तीनों को एक तराजू की तरह तीनों धागे को एक जगह बांध देंगे जैसे तराजू में बंधा हुआ रहता है, जो आपने देखा होगा आम जीवन में. Our day-to-day experience. Tie the other end of the longer string to the wooden tray and इस धागे को दूसरे छोर पर बांध देंगे जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो. And a string passes through this pencil so that it can rotate. Next, take some marbles. Take some marbles. मार्बल चिप्स जो कंचा आता है, कंचा छोटा छोटा आप देखे होंगे मार्बल चिप्स. वेरी स्मॉल मार्बल्स. एड पुट दीज मार्बल्स इन द प्लास्टिक लीड 1 by 1. एक एक करके इस डब्बे में, इस ट्रे में, प्लास्टिक ट्रे में, सिलिंड्रिकल टब में, ट्रे में एक एक मार्बल चिप्स पहले एक डालेंगे and then next other and next other. कब तक? तो put these marbles in the plastic lid 1 by 1 until the wooden tray
starts just sliding, जब तक कि ये धीरे धीरे मूव करना शुरू न हो जाए. नोट डाउन द नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड. आप एक एक करके डालेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है. वन बाय वन. द नंबर ऑफ मार्बल्स पुट इन द प्लास्टिक लीड इज एन इंडिकेटर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन. आप जो मार्बल चिप्स इसमें डालोगे, ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू of static friction, it is known as limiting friction. So note down the number of marbles required. Once the wooden block begins to slide, जब ये स्लाइड करना शुरू कर दे, जेंटली यानी धीरे से, टेक आउट ए स्मॉल मार्बल फ्रॉम प्लास्टिक लीड. एक मार्बल धीरे से हम इस जगह से निकाल लेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यस, इट स्लाइड्स. पिक अप अनदर सच अ स्मॉल मार्बल. इसमें से एक मार्बल निकालेंगे. डज द ब्लॉक ऑफ वुड stop sliding over the surface? What happens when we remove a sufficient number of marbles from the plastic lid? In the first case, when the block just begins to slide, जब ये धीरे धीरे खिसकने लगेगा, the force of friction is the maximum value, is the limiting value of the force of a static friction. Once the block begins to slide, the friction that exists is sliding friction. जब ये मूव करने लगा, it means that is the sliding friction. When two or more marbles removed मतलब इसमें से हटा लेंगे, removed from the plastic lid, the wooden block still keeps on sliding and moves to the other end. ये अभी भी खिसक रहा है of the tabletop with the same speed. It shows that sliding friction is less than static friction. This activity shows that sliding friction is less than a static friction. This activity 4, which I discussed earlier. This activity shows that sliding friction is less than static friction. एक्टिविटी 4 जिसमें हम लोगों ने ये देखा, when 2 or 3 marbles are gently removed from the plastic lid, the block of wood still keeps on sliding and moves to the other end of the tabletop. It shows that sliding friction is less than a static friction.
यानी जब स्लाइड करने लगता है कोई भी चीज़ तो फ्रिक्शन कम हो जाता है. ओके, I will explain two more topics in nutshell once again. Static friction and sliding friction. Just hear and understand it. A static friction. We call the force of friction as a static friction when it exists between two surfaces in contact between which there is no relative motion. In other words, the force of friction which balances the applied force during the stationary state of a body. It is called static friction. And sliding friction. And sliding friction, it is known as kinetic friction. Kinetic को हम लोग हिंदी में गतिज बोलते हैं. गतिज, ज मतलब जन्म लेना, गति मतलब मोशन. In Hindi, we can say kinetic friction, gatij friction, gatij gharsan. So sliding friction, it is known as kinetic friction. We call the force of friction between two objects when one of them is sliding over the surface of the other of as the sliding friction between them. Sliding friction is a little smaller than the static friction between the same two surfaces. Okay, and lastly again we call sliding friction is less than static friction. Thank you.